Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Okay, so we are doing the chapter squares and square roots. Have we completed the second exercise? No, Sir, we yes, have done till diagonal method and column method. Okay. I was explaining the diagonal method and column method. yes, sir, we have done. Yes, sir. Sir, we have to start the exercise 3D. Okay, just a minute. Let me share my screen. Okay, my screen is already shared now. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The squares and square roots. Exercise 3C. Sorry, 3C है ना कौन सी है? 3C. Sir, 3C. Yes, we have to start with Yes, sir. exercise 3C. First question. Let's start. Question number 1. We have to find 23 square using which method? We have to find 23 square using column method. The column method may you have to make a box like this. Please use pencil and scale for this box, all of you. I request use a pencil and scale for the box. Divide the box in 3 columns. So, and write a square, 2ab, and b square at the top of the 3 columns. Now choose a equal to 2 and b equal to 3. The first digit, tens place digit is always chosen as a, and the second digit, ones place digit is always chosen as b. Okay. So a equal to 2, b equal to 3. Now you find put the values here and find the values. 3 square is equal to 9. 2ab, that means 2 into 2 into 3. Putting the values of a and b, you get what? 4 into 3, 12. And finally a square, that means 2 square. 2 square is equal to 4. Now you can write the square of 23 by adding them in correct manner. First you write 9, then you write 2 from here, and 1 you will take this one and add it in the next column. ये जो 1 है, ठीक है, 1 को हम next column में add कर देंगे. So 1 plus 4 is 5. Answer is 529. Have you all understood?
कल भी डिस्कस किया था हमने. Yes, sir. Understood. Do the second part. So done the second part. So 122 is the answer. No, 1225. Okay. 1225. Yes, absolutely correct answer. Second part of first question. So I'm doing the second one. वैसे भी I think सबने कर लिया होगा. May I do the second or third one? I hope आप सबने second कर लिया होगा. So I'm doing the third one. Question 3. 52 square. 52 square. First you make a box. Okay. A square, 2ab and b square. So the value of a is 5 and the value of b is 2. Value of a is 5 and the value of b is 2. So 5 is square, 25. 2ab means 2 into 5 into 2. This is 20. Okay. And b square yani ki 2 square, which is 4. So you can write the answer now. 4. 4 को कॉपी कर लिया. Then 0. वंस प्लेस डिजिट को लिख लेंगे. 0. 2 को नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड करा देंगे. कैरी करा दिया 2 को. So this 2 when added to 25 it makes 27. So 2704 is the answer.
Clear? 2704. Yes. Have you all understood? Yes, sir. Yes, Do, sir. do the fourth part. Have you all done? Fourth part. 96 square. Yes, sir. Okay. Let's do the next method, which is
Diagonal. The diagonal method is. Just a minute. Okay, diagonal method. Question number 5 of the exercise. 67 square हमको निकालना है using the diagonal method. अब for the diagonal method, you make a square box. Again, draw it with the help of a pen. Okay, so this is the square. Now you write 6, 7 two times, vertically and horizontally. 6, 7, 6, 7, like this. Okay. Horizontally ऐसे लिख लिया 6, 7 and vertically 6, 7. Now you write the products. So first let me draw the diagonals. Now you draw the diagonals in each box like this. There are 4 boxes. We have divided the square into 4 small boxes. So all the 4 small boxes will be divided in 2 parts by the diagonals. Okay. Now write the product of 6 and 6 in the first box. 6 into 6 is 36. And 6 into 7 is 42. 7 into 6 again 42. I hope you all know how to do it. मैंने कल explain किया था 7 into 7 is 49. ये मैं product कैसे लिखा हूँ ये सबको समझ में आ गया? How are we writing the Yes, sir. products? Very good. Yes, sir. चलिए. So now you add the numbers. Diagonally you add the numbers. So सबसे पहले 9. इस तरीके से arrows बना लो. Second, third diagonal and the fourth one. इस तरीके से आप ऐड कर लेंगे. Make arrows like this. And now you add the sums. Find the sum. So 9, 2 plus 4 plus 2. Diagonally add करना है 2, 4, 2. ठीक है. ये वाला जो सेकेंड वाला जो एरो मैंने बनाया था इसके सामने देखिए 2, 4, 2 लिखा है. 2 plus 4 plus 2 is 8. Third one 4 plus 6 plus 4 is 14. 14. And the last वाला जो है उसमें there is only one number which is 3. Now you add them. So 67 स्क्वायर अब आंसर आने वाला है. देखो 9 ऐसे लिख देंगे, 8 को भी ऐसे लिख देंगे, 4 को यूनिट्स प्लेस वाला जो 4 है उसको ऐसे लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, जैसे हम पीछे वाले मेथड में भी कर रहे थे. 1 को नेक्स्ट स्टेप में कैरी कर दिया. सो 1 plus 3 is 4. आंसर इज 4489. इज इट क्लियर? Excuse me, sir. यस. Sir, can you just explain the starting method? Do you want to know how to multiply, write the products? Sir, writing the products. यस. देखो बेटा जैसे ये फर्स्ट वाला बॉक्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स. ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर देखिए विच नंबर इज रिटन 6, और इसके साइड में देखो वो भी 6 लिखा है. तो राइट द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 6 है 36. ओके. ऊपर और साइड में देखना है कौन कौन से नंबर्स लिखे हैं. तो जैसे 6 और 6 लिखा है तो राइट द प्रोडक्ट 6 और 6 36. ओके. फर्स्ट वाले ऊपर वाले पार्ट में 3 लिखेंगे, नीचे वाले पार्ट में 6 लिखेंगे. ओके. सिमिलरली ये वाला जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स में यू विल राइट द प्रोडक्ट ऑफ, देखो ऊपर देखो क्या लिखा है 7 एंड साइड में क्या लिखा है 6. मैं स्क्वायर के बाहर वाले नंबर की बात कर रहा हूँ. स्क्वायर के बाहर ऊपर देखिए 7 लिखा है और स्क्वायर के साइड में क्या लिखा है 6. सो 6 into 7 42. प्रोडक्ट लिख दिया 42. सिमिलरली नाउ इन दिस बॉक्स, यहाँ पर आ जाओ. इसमें भी देखिए ऊपर क्या लिखा है, सबसे ऊपर देखिए 6 और साइड में क्या लिखा है 7. सो 7 into 6 is 42. लिख दिया. एंड लास्ट ये वाला दिस बॉक्स, इसके ऊपर 7 और साइड में वो भी 7. 7 into 7 49.
This is how you write the products. Clear? Okay, sir. Now understood. Do the sixth question. 86 square निकालना है. Find 86 square. Have you all done the second part? Question 6. Yes, tell me. Yes, sir. Sir, done. Okay. चलो फिर let's do Sir, the can I tell the answer? next one. Yes. What is the answer? Sir, the answer of square of 86 is Is बताओ बेटा बताओ. minute, sir. Sorry. Sir, 7396. 7396. Yes. Okay. चलिए. So now we have to find the square of a 3-digit number. 137 square. ये निकालना है. Okay. So 3-digit number है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल सेम वही मेथड होगा. आप क्या करेंगे? बस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे so that you can divide it in 3 rows and 3 columns. That means अब छोटे boxes 9 हो जाएंगे. See, I am dividing the square in 3 rows and 3 columns. Okay. Draw the diagonals.
So 137 vertically लिख लिया 137. Now you write 137 horizontally also 137, and now you start writing the products. 1 into 1 is 0 1. 1 into 1 कैसे लिखेंगे? 0 1 लिखेंगे 1 into 1 को. Are you getting my point? This is important. First time ऐसा केस आया. So 1 into 1 is 0 1. Understood, all of you? Yes, sir. Understood. 1 into Yes. 3 0 3. 2 digit number बना के लिखेंगे. 1 into 3 0 3. 1 into 7 0 7. 07. 3 into 1 0 3. 3 into 3 0 9. 3 into 7 21. 7 into 1 0 7. 7 into 3 21. 7 into 7 49. तो ये मैंने products लिख लिए. Now let's add the diagonals. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, and then the last one. ये सारे मैं यहाँ पे लिख दूंगा. So 9 1 plus 4 plus 1 6. 7 plus 2 9 9 9 यानी कि 27. 3 plus 3 6. 1 and 0. Now you write the square. 137 square is equal to what? ऐड कर लेंगे आप. बिल्कुल सेम उसी तरीके से ऐड करना. बाकी सब कुछ सेम है. तो 9 6 7 2 कैरी हो गया, 8 हो गया ये, and 1. 18,769. This is the square of 137. कोई डाउट है इसमें किसी को? No, sir. Beta, have you all understood how to find the square of a 3-digit number? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, use the same method to find the square of 256. Last wala question karo. Last question. Start doing it.